Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 6, welcome to your science class. Today we are going to solve exercise of chapter number 2, Life and Living Things. And this exercise is actually given in your textbook of science, not workbook. Exercise questions are given on pages 29 to 31. Now the first page related to exercise in your textbook of science is 29, page number 29, and the MCQs which are given on this page are starting from first multiple choice questions. Question number 1 is multiple choice questions. So first, starting from this first question and part 1. The number of different kinds of animals on earth is roughly. दुनिया में अगर एक रफ एस्टिमेट लगाया जाए तो कितनी तरह के जानवर पाए जाते हैं, उनकी तादाद आपने बतानी है. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, एंड द आंसर इज़ अबाउट 1,500,000 types of different animals which are found on the earth roughly. Number 2. When using a microscope, which of the following combination of lenses gives the highest magnification? So, अगर आप एक माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं और माइक्रोस्कोप में आप लेंसेज का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी आपका एक लेंस जो है वो आई पीस लेंस कहलाता है और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, तो कौन सी कॉम्बिनेशन में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को या इमेज को ऑब्ज़र्व करने में ज़्यादा मदद मिलेगी, जिससे आपको हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन मिलेगी? सो अगेन योर ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट इन दिस केस, एंड द आंसर इज़ 10 टाइम्स. मल्टीप्लाई मीन्स टाइम्स. 10 टाइम्स आई पीस, यानी आई पीस लेंस की जो मैग्नीफिकेशन है वो 10 गुना होनी चाहिए, एंड द नेक्स्ट लेंस विच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी भी मैग्नीफिकेशन आपकी जब तक 10 टाइम्स नहीं होगी तब तक आप हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन नहीं देख सकते. देन यू हैव द थर्ड पार्ट ऑफ MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? कौन सा ऐसा पार्ट है, ऑर्गेनल है, जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता? सो ऑप्शन इज़ बी. बी इज़ करेक्ट, एंड विच ऑप्शन इज़ इट? क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल while it is present in plant cells. Number 4. Which of these parts controls what goes on inside a plant cell? यहाँ पर कौन सा पार्ट ये बताता है कि प्लांट सेल के अंदर क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है? सो दिस पार्ट ऑफ द प्लांट सेल इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस. सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, एंड द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज़ न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस कंट्रोल्स what goes on inside a plant cell. Then number 5. Which of the following carries messages around the body? वो कौन से सेल्स हैं जो कि मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं? So these cells are nerve cells. So option B is correct. Nerve cells. आपकी बॉडी में नर्व सेल्स मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का या कैरी करने का, कन्वे करने का काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द सेम पेज रिलेटेड टू ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स, सही और गलत में आपने फ़र्क मालूम करना है. फर्स्ट वन फॉर यू. ऑल लिविंग थिंग्स कैरी आउट द सेम लाइफ प्रोसेसेस. तमाम लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमंस हों, उनमें लाइफ प्रोसेसेस एक जैसा ही काम करते हैं. सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में
लाइफ प्रोसेसेस डिफरेंटली एक्ट करते हैं, डिफरेंट होते हैं. सेकेंड वन, एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. फूड के ब्रेक डाउन के नतीजे में, या यूँ समझ लें कि जब फूड आपके जिस्म में यूटिलाइज हो रही होती है उस वक्त एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है एक्सक्रीशन कहलाता है. सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. वो प्रोसेस एक्सक्रीशन नहीं बल्कि रिस्पिरेशन कहलाता है, सांस लेने का अमल. उसमें आपकी एनर्जी फूड से रिलीज़ होती है. देन द थर्ड पार्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स इज़ ऑल सेल्स हैव अ सेल वॉल. तमाम सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है. इट्स फॉल्स, गलत है, क्योंकि सेल वॉल is only present in fungus, plants and some unicellular organism. Next, number 4. Multicellular organisms are made up of millions of cells joined together. Multicellular organism बहुत सारे सेल्स के मजमूए यानी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं. एंड इट इज़ करेक्ट. It is true. Then the fifth part of true or false. Red blood cells have a large surface area to pick up lots of oxygen. True. What is the meaning of this part? कि red blood cells आपकी बॉडी के वो सेल्स हैं जो कि लार्ज सरफेस एरिया कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन की एक बड़ी मिकदार आपकी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्पफुल है, या आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं. सो दीज आर द टू क्वेश्चंस विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 29. नाउ ओपन पेज नंबर 30. पेज नंबर 30 ऑफ योर एक्सरसाइज portion. And here you will find question number 3. Write the correct life process alongside each description. There are some life processes are given in the form of keywords, and you have to write down alongside the description these life processes. For example, first one, producing more of the same kind. More of the same kind. Meaning of this के ऐसा प्रोसेस, ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा पैदा करे या अपने जैसे और पैदा करे. सो द आंसर ऑफ दिस इज़ reproduction. That is reproduction. And what is the meaning of reproduction? दोबारा पैदा करना, अपने जैसा दोबारा पैदा करना. Now the second description is related to changing position. So this is related to changing position. Changing position. So if an organism move from one place to another, it means it actually responsible for moving. So which life processes is it? It is called movement. Moving from one place to another. Changing position mean moving from one place to another. Next part, number 3. Increasing in size. Increasing in size. अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने साइज़ में बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा पौधा, एक छोटे से पौधे की मिसाल ले लें कि अगर एक छोटा सा पौधा बढ़कर एक बड़ा या ह्यूज ट्री बन जाता है, तो इसका मतलब है कि एक छोटे से पौधे का बड़े से ट्री में तब्दील होना, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस लाइफ प्रोसेस कॉल्ड? दिस लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रोथ. यानी एक छोटा प्लांट
या एक छोटा ऑर्गेनिज्म बड़े ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है. देन नेक्स्ट पार्ट इज रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. A life process is, or one of the life process in which energy is released from food, जिसमें से फूड में से या जिस प्रोसेस में फूड में से एनर्जी खारिज हो रही है या रिलीज़ हो रही है. सो दैट लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पिरेशन. उस लाइफ प्रोसेस को कहा जाता है सांस लेने का अमल, रिस्पिरेशन. Now another thing is number 5, reacting to something. Reacting to something. And what is the meaning of this? Reacting to something. किसी चीज़ के अगेंस्ट या इन फेवर रिस्पॉन्स करना, यानी कोई एक्शन शो करना, एंड दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स. व्हाट इज दिस? रिस्पॉन्स. नंबर 6, गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट. अपनी बॉडी से तमाम बेकार चीज़ों को बाहर निकालना. गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट. चीज़ों को या जितनी भी बेकार चीज़ें हैं उनको जिस्म से ख़ारिज कर देना, जिस्म से निकाल देना, चाहे वो आपका स्वेट ही क्यों ना हो, पसीना क्यों ना हो. एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन. नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर 7, टेकिंग इन फूड. Taking in food or raw materials. Raw materials. अपनी बॉडी में बाकायदा किसी खुराक का लेना, मुंह के ज़रिए किसी फूड का जिस्म में दाखिल करना. एंड द नेम ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस इज़ कॉल्ड फीडिंग. It is the feeding behavior of organism that it takes, or any organism takes in food or raw material, and that is normally called feeding. खाना, मुंह से कोई खुराक लेना, मुंह से खाना लेना. Now question number 4 on page number 30 is, the diagram shows a cell. Here you can see a diagram of a cell. Now you have to identify that which cell is this. Does the cell come from a plant cell or an animal cell? So answer is, it is an animal cell. ये सेल प्लांट है या एनिमल, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है. तो ये सेल एनिमल सेल है. अब हमें कैसे पता चला कि ये एक एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल क्यों नहीं है? सो यू हैव टू राइट डाउन 2 रीज़न फॉर योर आंसर एज वेल. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेल, दैट इज़ एनिमल सेल, एंड अलॉन्ग विद इट यू हैव टू गिव 2 reasons फॉर योर आंसर. सो व्हाट आर दीज 2 reasons? फर्स्ट रीज़न, all animal cells have cell membrane. क्योंकि तमाम एनिमल सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जो इनकी आउटर कवरिंग है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर आउटर कवरिंग सेल वॉल कहलाती है. अनदर रीज़न रिलेटेड टू न्यूक्लियस. इन एनिमल सेल्स nucleus is present in the center of the cell or in the middle of the cell. एनिमल सेल्स की ख़ास बात ये होती है कि इसमें न्यूक्लियस
सेंटर में होता है, यानी तकरीबन अगर आप देखें तो ये सेंटर में है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता बल्कि ये थोड़ा सा साइड वॉल की तरफ चला जाता है, यानी एक साइड पर आ जाता है। और ये क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज वैक्यूल which is formed in the middle of the cell. Now question number 2. Question number 2 or part 2 you can say, and the part 2 is related to the question that each animal and plant cell has a nucleus. So what does the nucleus do? न्यूक्लियस क्या काम अंजाम देता है? न्यूक्लियस का फंक्शन आपसे पूछा गया है। So nucleus acts as the brain of cells या brain of cell। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन यानी हमारा दिमाग क्या करता है, ये हमारे तमाम कामों को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल के दिमाग या ब्रेन को न्यूक्लियस कहते हैं। And nucleus acts as the brain of cell to control all the activities of cell, क्योंकि न्यूक्लियस ही सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। So this is the answer of part 2. So this is the part 2 of question number 4. Now question number 5, and the question number 5 is related to this diagram. Now this diagram shows a nerve cell from an animal, because the nerve cell is not present in plant cell. So what is this cell called? It is a nerve cell. Nerve cell. And you can also observe or see the nucleus in the center of the cell, as well as some other structures like outer covering, which is called cell membrane, and some branches as well. These are the extended branches. And along with it, you can also observe the central or the fluid which is present around the nucleus called cytoplasm. So this is a structure of a nerve cell from an animal cell. Now you have to give the answer of the question asked in different parts. So the first part is A. First part is A. What is the job of a nerve cell? So very simple answer. नर्व सेल क्या काम करते हैं? नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस, they actually responsible for conveying messages. So carry messages from one part of the body to another. And the main function where they are involved is to carrying message to the brain and spinal cord, which interpret the messages in the form of different responses. B part of question number 5 is describe how this cell is suited to its job. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये सेल अपने फंक्शन के लिहाज से क्यों बनाया गया है। रीज़न फॉर दिस आंसर इज because these cells or nerve cells, these cells are scattered throughout the body, and they carry messages not only from one part to another, but they are long cells of the body as well.
बिकॉज दीज सेल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी मीन्स कि ये सेल्स आपके पूरे जिस्म में फैले होते हैं. एंड इवन सम ऑफ दीज नर्व सेल्स आर 1 मीटर लॉन्ग. ये इतने ज़्यादा लंबे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर कि 1-1 मीटर तक फैले होते हैं. और इनका काम दूर दूर से यानी जिस्म के अंदर आपके बहुत दूर के पार्ट से भी मैसेजेस को लाना होता है और ले जाना होता है. सो बिकॉज दीज सेल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट योर बॉडी एंड कैन ईजिली सेंड मैसेजेस. सो they can easily or they can send messages easily. इनका लंबे होना और पूरे आपकी बॉडी में फैलने की वजह से, फैले हुए होने की वजह से ये मैसेजेस को आसानी के साथ आपके जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेकर जा सकते हैं. Now students, open page number 31 of your textbook. On this page you can find the part 2 of your question number 5, and the question is you have to put these all levels in order starting with the simplest one. And which is the simplest one here? Cell. So you have to put all these levels in ascending order starting from the lowest or the simplest level. So the first simplest level is cell, and when a cell is combined or organized, they are, or different cells are combined together, they form tissue. Tissues are combined together to form an organ. Organs or different organs combine together to form organ system, such as digestive system, respiratory system, excretory system, nervous system, and so many other. And organ systems are combined to form a whole organism. An organism can be man, human, it can be an animal or plant. So these are all organism: plant, animal or humans. Now on page number 31 we have another question, question number 6. And according to this question, there is a picture of human eye is given, and you have to write down 4 different parts or questions related to this diagram. So the first thing of the first question is related to the labeling of the parts from A to labeling of parts A to E. Now we are going to start labeling A. What is A part of the eye called? A is iris. It is the colored part of eye. B is the front portion of the eye. It is called cornea. C is the hole which is present between the iris. So it is called a pupil, which is a hole. D is convex shaped structure called lens of the eye, and E part is the innermost layer of the eye called retina. Retina. Now the next question is question number 2. What changes the shape of the lens, that is the part D, to enable the eye to focus? So these are the ring of muscles which are present in the surrounding. So these are the ring of muscles. These muscles actually control the shape of the lens according to need. Third part or third question is, which part contains light sensitive nerve cells? आई के स्ट्रक्चर में कौन सा आपका हिस्सा है जहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, यानी नर्व सेल्स मौजूद होते हैं? सो द आंसर नंबर 3 इज रेटिना इज दैट पार्ट और लेयर in which the light or photosensitive cells are present. Now the fourth question is,
that the optic nerve which is present here carries signals from the eye, that is the retina of the eye, to the brain. Now what does the brain do with these signals? So actually brain makes a result, or brain interprets these signals in the form of or as picture. So we can say that brain interprets these signals and produce picture which we want to see. So students, this is the end of today's lesson about the exercise of chapter Life and Living Things, which is actually related to your science textbook. The next lesson will be related to your science workbook on chapter number 2. So thank you so much. Allah Hafiz.